Sir, you are not audible. Hello, hello. Yes, sir. Now you are audible. ओहो, पहले ही बता देते ना. Anyway, okay. So, yeah, I just told you what portions we have completed here, and we have just started that how to detect the overflow. Now, I told you that if two negative numbers are added, you need to remember these two conditions. Okay. And what are they? Two negative numbers. When you add them and you got the answer as positive, that will be the overflow. Okay. And similarly, when you add two positive numbers and you got the answer as negative, then that is also an overflow. So how to detect that? To detect that, you just need to check the most significant p. Am I means audible clearly? All of you can listen by? Yes, sir. Okay. सो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एमएसपी जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट जो है, इसको जस्ट चेक करोगे, आंसर का भी और ऑपरेंस का भी. अगर ऑपरेंस का आपने चेक कर लिया पहले के दो निगेटिव था और पॉजिटिव आंसर मिला है, तो वो क्या हो जाएगा, एक ओवरफ्लो. सिमिलरली आपने पॉजिटिव नंबर्स तो ऐड किया है, तो दो पॉजिटिव नंबर कैसे पता चलेगा, you have to check the MSB. Now you tell me quickly, 0 is for positive or negative? 0 क्या था, पॉजिटिव के लिए था या नेगेटिव के लिए था? Any one of you? जल्दी बताओ. अरे, अबीर, कृष्णा, आर यू देयर? ये सब देखो, एक ये सब तो मैंने कितना सारा चीज करा दिया था आप लोगों को. पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, पॉजिटिव Yes, के लिए sir. क्या है, 0 है. हाउ कुड यू फॉरगेट दैट? हाँ, भूल मत जाना ये सारे चीज, ठीक है? Yes, sir. ओके, प्लीज डोंट फॉरगेट इट. सो एमएसबी को चेक करके आप पता लगा सकते हो. नाउ, instead of using 3-bit comparator, overflow can also be detected using 2-bit comparators, just by checking the carry in and carry out. Carry in and carry out. Carry in means C in, carry out means C out from MSB. Now consider this n-bit addition of 2's complement number. दिखाई दे रहा है? This is an n-bit number because A0 to an minus 1, right? So if I count from 0 to n minus 1, how many bits I am occupying? कितने बिट हम ऑक्युपाई करके रखा है यहाँ? अरे n बिट ना, 0 से n minus 1 तक हमने कंसीडर किया है, तो that is n bit. Similarly, from B0 to Bn minus 1, how many bits I'm considering? N bit. Yes. तो ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, this two, just a minute, okay. This is what exactly C in. जो दो numbers हमने, let me clear this. You can see this diagram, right? An minus 1 and Bn minus 1. So C in. Now when you add them, when you got this as output, ठीक है, मैंने A और B consider किया है. A में भी n bits हैं, B में भी n bits हैं, right? B0 to Bn minus 1. What is the sum we have got? Say S. And S is S0 to Sn minus 1. Okay? Right? Now consider these two. 0, 0, SC in
but you got as what? 1 as C out. So what will be the condition here? Overflow is occurring or not? अभी मैंने Yes, बोला sir. था क्या होगा? ओवरफ्लो होगा या नहीं? Sir, overflow होगा. Okay, very good. Similarly, this is also 1 1, but you got C out as 0, right? That is also a condition. So in exam, you have to write like this. You have to draw these figures to show it. Okay, and you can detect this overflow using XOR gate also. You all know what is XOR gate? ऐसा तुम लोग के ये मिला था पहले आप लोगों को XOR gate? XOR Yes, gate? Yes, sir. sir. या क्योंकि फंडामेंटल्स जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स था उसमें भी मैंने कवर किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, XOR गेट कुछ इस प्रकार का है. इट लुक्स लाइक दिस, राइट? एंड लेट मी recall the truth table of this. Okay, 0 0, what will be the value of XOR? Sir, 0. 0. Okay, अभी बोल रहा है ये 0 होगा. ठीक है, मैं 0 लिख रहा हूँ. 0 1 क्या होगा? हाँ, what will be the value of this? Sir, 1. 1. Okay, 1 1 0 One, Sir, 1. 1 1 one, 0. 0 1 1 Zero. 0 होगा. ठीक है, very good. So you can recall this. So it's simple assignment for you. Write it that how you will use XOR gate to detect the overflow. ठीक है, question समझ में आ गया? After this lecture you will get it. You will need to answer this. What is means the role played by XOR gate to detect the overflow, or how XOR gate can be used to detect the overflow? In your own words, within 2 or 3 sentences, you will explain this. ठीक है? Is this clear? Yes, sir. Okay, very good. yes, sir. Now these things we have covered, so I'm not going into it. Now I come directly. You have already drawn these figures. I have given it earlier. Now memory locations, addresses, and operations. See, I'm considering n bits here. This is the first word. This is the second word. This is the ith word, and this is the nth or the last word. So memory consists of different memory cells, and we are considering that each of the cell is how many bit? 1 bit. Okay. So first statement says that memory is consisting of different cells. I hope you have already worked with flip-flop. Flip-flop, you know that, right? We have covered it in our computer fundamentals paper, right? If I'm not wrong. Yes, sir. Okay. So good. So storage cell, we are considering each of them is storing how many bits? 1 bit. Now data is usually accessed in n bit group, and this n, जो n bits है, n is known as the word length. Okay, so यहाँ दिख रहा है आप लोगों को first word, second word, ith word, last word. So if n bit groups are there, then we are considering it as a n bit, or word length is n bit. Now let's consider 32-bit word length example. So you have seen in your computer network paper about the IP version 4. That is how many bit? 32 bits. Yes or no? Yes, कितना होता sir. है version 4 का एड्रेस? इसमें 32 bits. I can hear only one yes. I want to listen from all of you. Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, good. So see, B0, B1 up to B31. So this particular
word has how means the length as 32 bits. ठीक है, ये पता है, but still I am considering them B0, B1, B30, B31. अब ये जो B31 इसको क्या बोलते हैं हम? जल्दी बताओ, what is the particular term we use to represent it? Sir, MSB. Very good. क्यों, बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सिंपल टर्म, ठीक है, भूलना नहीं है ये चीज. सिग्निफिकेंट बिट, राइट? क्यों? बिकॉज सी जीरो, इफ इट इज जीरो देन ये क्या नंबर होगा आपका? दिस विल बी ए पॉजिटिव नंबर. इफ इट इज वन देन दिस विल बी ए नेगेटिव नंबर, राइट? ठीक है. सो ये एक पार्टिकुलर 32 बिट वर्ड का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए 32 बिट वर्ड, और वर्ड ऑफ थर्ड लेंथ 32 बिट. Okay, now if we divide it like this, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. So how many groups we can have from here? जैसे आप लोग 4, ठीक है. जैसे आप IPv4 एड्रेस को भी आप डिवाइड करते हो, ठीक है, यस और नो? ऐसे ही तो करते हो आप लोग. क्लास A एड्रेस, क्लास B एड्रेस, क्लास C एड्रेस, क्लास D एड्रेस, ठीक है. तो हम 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स करके डिवाइड करते हैं. सिमिलरली दिस इज द 4, and this we are representing with suppose ASCII character, then that will be 4 characters. ASCII stands for, भूलना नहीं, ये सबसे डिस्कस किया था ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. याद है कि नहीं? ASCII. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है कभी कभी. ओके, नाउ टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी either for one word or for one byte, क्योंकि जो 8 बिट्स हैं, you all know that 8 bits form 1 byte. Addresses for each location are loaded. ठीक है, आपको ये जो ऐसे दिखाता हूं तो ज्यादा सही रहेगा. सपोज इस 8 वर्ड को एक्सेस करना है तो आपको क्या चाहिए होगा? You should have the address, location address of this 8 word. उसके लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है, या तो आप फर्स्ट वर्ड का एड्रेस जान लो, जिसको हम बोलते हैं क्या एड्रेस? बेस एड्रेस. ठीक है, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन केयरफुली. ओके, ये बेस एड्रेस हो गया, और यू नो दैट व्हाट इज द स्टोरेज साइज ऑफ दिस. मतलब इस वन इज सपोज 4 बिट, और आपको पहला जो एड्रेस है, यू नो अबाउट द बेस एड्रेस, लोकेशन एड्रेस, देन you can easily find the 8 word address. Am I right or wrong? निकाल सकते हो कि नहीं? बेस एड्रेस आपको पता है. आपको ये भी पता है कि हर एक वर्ड जो है ना कितने बिट्स का है? 4 बिट का है. मैं लिख के रखा हूं, और आपको मैं बोल दिया हूं कि 15 लोकेशन का एड्रेस निकालो. कैन यू डू दैट? Yes, sir. ठीक है, निकाल के देखना सब लोग. मैंने क्या एग्जांपल दिया? सपोज ये जो है, इस वन इज 4, और मैं ये भी बता दिया हूं, ये जो पार्टिकुलर इसका एड्रेस है से 1024. ठीक है, इस वन इज 4. नाउ यू नीड टू सपोज फाइंड आउट द 15th words location address. You can do it. Please try it. If you find problem, then I will solve it for you. Okay, first you will try. सब लोग करके देखोगे ना? Yes, sir. वेरी Yes, sir. सिंपल है. थोड़ा Yes, थोड़ा sir. हाँ, थोड़ा Sir. ये देखना. यस, वेरी गुड. एक बार ट्राई करके देखना. मैंने हिंट दे दिया. ये आपको पता है, ये 1024 है, और ये 15 लोकेशन में है, और हर एक 4 बिट में है. तो ये क्या होगा? 8 होगा. इसी तरह ये 24 होगा. लाइक दैट यू नीड टू फाइंड इट आउट. So the same thing we are talking about here. You should know the address of the base, then only you can find it out. You also know then a k bit address memory has 2 to the power k memory location, क्योंकि एक bit, one single bit may have 2 different either 0 or 1 associated with it. So each bit is considering 2, so it is k bit, so this will be 2k. Okay,
And that will be, if I'm considering from 0, then this is up to 2 to the power k minus 1. Okay. Similarly, for 24 bits like this, 32 bits like this. Okay. And now you need to recall this. ये दोनों चीज याद रखना. 1k means 2 to the power 10, and 1t means 2 to the power 4t. Okay. T stands for terabyte. Then if I ask you 1 gigabyte in terms of 2 to the power, what it will be? क्या होगा ये? If you got me, if 1k I'm writing like this, 2 to the power 10, then what it will be if 1 gigabyte is equal to 2 to the power Sir, how much? 10,000. 2 to the power? Sir, 10,000. 2 to the power to 10,000 hobo janu halke soasun. So 1k is equal to 2 to the power 10. एक चीज आप लोगों को याद है ना, 1 MB is equal to how much? 1024. KB. gigabyte. 1 gigabyte is equal to how much? 1024 MB. MB. तो फिर यही तो पूछ रहा है कि 1 gigabyte को 2 to the power कितना होगा? How much the power is for these two with respect to 1 gigabyte. और आपको ये दे दिया गया है 1k is equal to 2 to the power 10. 1k आपको दे दिया है 2 to the power 10. ठीक है, मैं दिखा देता हूँ. 1 m क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ ये हो जाएगा आपका 2 to the power 20. अब बताओ क्यों? क्योंकि देखो 1 MB is equal to 1024 KB. ठीक है, 1024 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 to the power 10, can I write it like that? Yes or no? Yes, sir. तो Yes, sir. 2 to the power 10 into 1 KB का वैल्यू कितना था? 2 to the power 10? 2 to the 10. Yes or no? So 2 to the power 10 cross into 2 to the power 10, that is 10 plus 10. Then it will be 2 to the power 20. 20. So अभी हमें पूछा है 1 gigabyte. तो 1 gigabyte is 1024 MB. ठीक है, 1024 मतलब 2 to the power 10 और 1 MB मतलब हमें कितना मिला था? 2 to the power 20. 20. Okay. So overall, if I calculate them, that will be 2 to the power 30. Yes, is it clear? ठीक है, बुझी Yes, पाला sir. सबे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So similarly, you can find out what is 1t with respect to 2. You can do it, right? 2 to the power 40. ठीक है, तो ये जरा चीज आपको यूज करना पड़ेगा when you go for solving the numerical problem. So please remember them. It is impractical to assign distinct addresses to individual bit location in the memory. The most practical assignment is to have successive addresses refer to successive byte location in the memory, byte addressable memory. Byte locations have addresses 0, 1, 2. If word length is 32 bits, their successive words are located at 0, 4, 8 like that. अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस एड्रेस ये हुआ और जिसका सेल का साइज मैंने मान लिया 4 सपोज, तो वो सक्सेसिव ऑर्डर में सपोज फर्स्ट वन इज 1024, द नेक्स्ट एड्रेस विल बी 1028, द नेक्स्ट वन विल बी 1028 plus 4. In that way we have to arrange the memory cells. That's what this pair is trying to mean for. All of you got that, right? Yes, sir. Okay. Now bit endian and little endian. Bit endian lower byte addresses are used for the most significant bytes of the word, and little endian means
opposite ordering. Lower byte addresses are used for the less significant bytes of the word. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ. I'm repeating again. Big endian means lower byte addresses. Lower byte addresses will be used for the most significant bytes of the word. And similarly, little endian means opposite ordering. Means ये जो हमने big endian में किया था उसका opposite, that is lower byte addresses will be used for less significant bits. Now you consider these two diagrams. ये दोनों diagram you can see that. Now I'm giving 1 minute of time to you. Look at both of them. पहले ये देखो ध्यान से, हाँ. Now look at this one. You tell me how they differ from each other. ভালকে দুইটা লক্ষ্য কৰা তাৰ পিছত মোক কোৱা যে इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है. ठीक है, एक बिग एंडियन है और जो बी है वो लिटिल एंडियन है. Sir, Yes. sir, in the first case, we are taking the most significant bit as the word address. And in the second case, we are taking the less significant bit as the word address. এতিয়া আপুনি তুমি অলপ এক্সাম্পল সহায়ত কোৱা মানে কেনেকে how actually you got to know about it. Sir, first case আছে sir আমাৰ ওচৰত byte address আছে Okay, হ'ল মই one to 0, মানে 1, 2. you are talking about one na, I come to this one. Yes sir. চবে ভালকে শুনি যাবা. In case 1 we have the byte address 0, 1, 2, 3. So here the most significant bit is 0. So we are taking 0 as the word address. And again, second also 4, 5, 6, 7 is our byte address and 4 is the most significant bit. So we are taking 4 as our word address. And in the second case, the byte address is 3210. And here 3 is the most significant bit, but we are taking the less significant bit, which is 0. So we are taking 0 as our word address. Similarly, the down part also 7654 is our byte address, where 7 is the most significant bit, but we are taking the less significant bit, which is 4. Okay. Okay, very good. Abir. Okay, good. আৰু কোনোবাই কবা कृष्ण আৰু বেলেগ বেলেগ কোনে কব বিচাৰিছা কব পাৰা किसी और को बोलना है बोल सकते हो. Come on, anyone. बहुत सिंपली বস্তুটো ওলাই আছে ইয়াত কোৱা হৈছে यहाँ पे क्या बोला गया है lower byte address are used for most significant bytes of the word. In which case big endian bit. अब यहाँ ये particular number पे अब ये बताओ most significant bytes कौन सा है इसमें. Sir, 0. Right. तो lower bytes को हम यूज कर रहे हैं किसमें MSB के केस में. Right. Yes or no. Yes sir. ठीक है तो ये कंसीडर कर रहे हैं हम तो वी गॉट दिस एड्रेस. ना इसका ऑपोजिट केस में मतलब क्या हो रहा है लिटिल एंडियन में मैं आप लोगों को अभी ने जो बताया ही इज वेरी मच करेक्ट. नाउ आई एम मेकिंग इट सिंपलर टू अंडरस्टैंड इट. तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नाउ कंसीडर दिस वन ये तो समझ में आ गया. ये 0 हमने कहाँ यूज किया है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट्स में. राइट. नाउ consider this one. Which one is the most significant or MSB in this case? কোনটো হৈছে? Sir, 3. Okay. তিনিটো কি সবতকে সৰু? Is 3 less here?
or is 0 is less here? Are So This is- 0. LSB, least significant. LSB 0. See, in the case of Little Endian, lower byte addresses are used for less significant bytes of the word. यहाँ क्या किया था? Lower byte addresses are used for MSB. Yeah, lower bytes are used for LSB. That's the thing. Opposite of each other. So the if you look at them only, you'll totally find the difference. They are opposite, right? Here you are using lower bytes for MSB. Here you are using lower bytes for LSB. MSB A2 or LSB Kuntu. LSB is this one. Now is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Sir. यहाँ से आप देखोगे तो क्या होगा, ये बढ़ते आ रहे हैं कि नहीं, 4, 5, 6, 7. जो MSB है, MSB में मैं कम वाला कंसीडर कर रहा हूँ. Yes, but यहाँ आप देखोगे, in this case of Little Endian, what is going on? From little to from LSB to MSB, the values are increasing. Okay, just opposite of each other. Now I hope that this big Endian and little Endian is clear to you. Yes, sir. Okay, with this I am ending today's class, but remember to simple things I have asked. Don't forget to answer them. Okay, you can skip no koriba.